The second syllabus theme is कि you should be able to arrange your topics in an orderly fashion, which means आपके essay में flow होना चाहिए, there should be structure. Again 2024 का जब मैंने अपना essay पढ़ा तो मुझे realize हुआ कि I was still following one paragraph, one idea approach, पर वो random progression था, which was losing the central thread of the essay. तो उसके लिए मैंने Alfred के approach से मदद ली, which helped me actually have seamless transition. तो he would also start with a hook and give a linking paragraph. उसके बाद he also tried to avoid this explaining the keywords या तो writing in this essay we will explore. And I was also convinced that somewhere I was limiting the scope of my discussion when I did that. तो मैंने उसको avoid किया. After that I would give an evolutionary context का एक paragraph. For example एक ऐसे topic है that the process of self discovery has been technologically outsourced. तो उसमें मैंने ऐसे दिखाया कि कैसे ह्यूमन माइंड कैसे एरास के थ्रू आप समझ सकते हो. जैसे रेनेसा के पीरियड में इट वाज एज प्रिसाइज एज द क्लॉक. ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट वाज very complex like a steam engine. Then when we look at that of telephone exchange era, उस टाइम आप in connections के through आप human mind को समझ रहे थे. Then in today's age, which is the age of AI, you understand human mind as data sets. तो इसके through एक sort of evolution set हो जाता है. It gives a philosophical dimension also, I think, to your essay in the introduction bit only. राइट कंटेंट और राइट स्ट्रैटेजी से ही बनते हैं यूपीएससी सीएससी में टॉपर. अगर चाहते हो यूपीएससी में टॉप करना, जुड़ जाओ आज ही स्लीपी क्लासेस आईएएस के साथ.